Thank you for being here on time. My colleagues on my right, Sagarika Ghosh, Deputy Leader of the All India Trinamool Congress in the Rajya Sabha. On my left, Saket Gokhale, Member of Parliament, All India Trinamool Congress, and before that he was a journalist like Sagarika Ghosh. I'm sandwiched with two journalists, famous journalists. So let's begin today where there's been so much of news on this issue since yesterday. So today we'll focus on SIR. What does SIR actually stand for? Software Intensive Rigging. So that's the purpose of this press conference, to tell you more about software intensive rigging. We have, the Election Commission is one of the great institutions of our country, which has kept democracy vibrant for over so many decades. But what has been happening now is a dismantling of this great institution. All we seek from the All India Trinamool Congress is transparency. That's it. We want transparency. We've said this 75 times before. Our chairperson has said it. Our National General Secretary has said it. We are for SIR, but we are for a transparent SIR. We are for a planned SIR. We are for a humane SIR. And what has been happening? So we want transparency. So 2 points. One is the Chief Election Commissioner, the ECI, they have a role to play. They can't be the hangman. They can't be the executioner. And why do they want to make the electoral process? Why does it have to become a burden for the elector? So we want transparency. Today is day 50 or day 51 since the Trinamool Congress delegation went. We went on 28th of November, then again we went to the Election Commission on 31st of December, led by our National General Secretary Mamata Banerjee. Before that, our chairperson had instructed us to be there end of November. It's been 50 days. So, we told you about software intensive rigging, and now we ask, where is the transcript of those meetings? Because once you release the transcript of those meetings, you will actually know what are the constructive suggestions made by the All India Trinamool Congress. Release the transcript, please. And on a lighter note, if the Election Commission don't want to release the transcript through any other medium, they are the masters of WhatsApp. Chalo, at least put this out on WhatsApp so we can all release it. It's been 50 days. So don't push our patience. We are very patient. Because if you don't release those transcripts, we will release those transcripts. We will release those transcripts. And there are people who think that the EC, they've come up with new different names at a press conference here of the third largest political party in the country. I don't want to quote what other people are saying. That time I was hearing somebody on a flight that is saying, what do you all think EC is? EC is actually excellent. Excellent chamchas. But we're not getting into that. We are on a more serious issue. Cooperation Secretary Amit Shah was the Home Minister, who was the Cooperation Secretary from 2022 to 2024. When abrogation of 370 came, August 2019, who was the Additional Secretary, Ministry of Home Affairs? Vanish. So this is a very serious issue. And
We also wanted to talk about the future. We won't address it today, is that the model code of conduct and how the Election Commission must implement the model code of conduct. Otherwise, the model code of conduct is only implemented for the opposition parties. So this is the summary of what we had to say today. Obviously, we'll take questions. Software intensive rigging. We wanted transparency. We want the transcripts to be released because it's been over 50 days. It's been over 50 days since the meetings were held. And the last thing which I have to say is that our appeal to the Election Commission is, you've become so brazen about it. Because if you release those 3.5, 4 hours, then whatever transpired in the last 4 hours or 5 hours of meetings with them, then what happened at those meetings and what happened yesterday in the courts, then the people will get to know. And we are glad that the people of Bengal are fighting this. This is not Trinamool versus somebody else. No, this is the people of Bengal versus those who are trying to make the electoral process burdensome on the elector. No better person now, this morning, than Sagarika Ghosh. Thoda Hindi mein, little in Hindi, and then also we can do little in Bengali, and then we will also short, and then we will also take some questions on software intensive rigging, because you all know what happened in the software. नमस्कार दोस्तों, बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ आए हैं। जैसे मेरे सीनियर कॉलीग ने कहा, आज हम चुनाव आयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है, हम कोर्ट पर नहीं टिप्पणी करना चाहते हैं, पर हम ये जरूर कहेंगे कि उच्चतम न्यायालय से भी निर्देश आया है कि चुनाव आयोग को पारदर्शिता से काम करना चाहिए। चुनाव आयोग को राजनीतिक इरादा या राजनीतिक मंशा से नहीं काम करना चाहिए। चुनाव आयोग को पारदर्शिता से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग का जो संवैधानिक दायित्व है कि वोट देने का अधिकार को बचाना और नागरिक का जो वोट देने का अधिकार है इसको बचाना, ये संवैधानिक दायित्व है चुनाव आयोग का। तो चुनाव आयोग को इस दायित्व को पालन करना चाहिए। तो जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज, इसे हम कह रहे हैं ये एक्चुअली SIR है, सॉफ्टवेयर इंटेंसिव रिगिंग। जिस तरह से ये SIR प्रक्रिया को कर रहे हैं, ये है एक सॉफ्टवेयर इंटेंसिव रिगिंग। इसमें ना पारदर्शिता है, इसमें बहुत जल्दबाजी है, हड़बड़ाहट है, बुजुर्ग के ऊपर बहुत परेशानियां डाल रहे हैं, जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो परेशान है, और इस पूरे प्रक्रिया में बहुत सारी कमियां हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सॉफ्टवेयर इंटेंसिव रिगिंग में नहीं बदलना चाहिए, और जैसे उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है, चुनाव आयोग को पूरी तरह से पारदर्शिता से काम करना चाहिए। हम ये भी कहेंगे, जैसे मेरे सीनियर कॉलीग ने कहा, कि हमने 2 मीटिंग किए हैं, हमारी प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से 2 बार मिले हैं, नवंबर 28 में और दिसंबर 31 में हम लोग गए थे। हम चाहते हैं कि उस मीटिंग के जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आप रिलीज कीजिए, क्योंकि पारदर्शिता से काम करने का तरीका यही है कि जो हम मीटिंग्स पे गए हैं, हमारे जो ट्रांसक्रिप्ट्स है वो आप रिलीज कीजिए, और इस तरह से किसी राजनीतिक दल और राजनीतिक दबाव में नहीं आकर के निष्पक्ष होके चुनाव आयोग को काम करना चाहिए, जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग को काम करना होगा। जैसे हमने कहा कि ये जो हमारे चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी हैं, इनका हिस्ट्री भी आपको पता है। ये
प्रतिनिधि थे, ये सचिव थे, होम मिनिस्ट्री में सचिव थे, ये जब ये अमित शाह के डायरेक्टली अंडर उनके अंडर काम करते थे। तो हम ये चाहते हैं कि ये सब जो दबाव है, ये सब जो राजनीतिक दबाव है, ये नहीं होनी चाहिए चुनाव आयोग में, और चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। एक तो बांग्ला बोले दो, जस्ट एक নমস্কার, থ্যাংক ইউ ফর কামিং। আপনারা জানেন যে যেভাবে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশনটা নির্বাচন কমিশন করছে, এটা দিয়ে অনেক মানুষের অনেক কষ্ট হচ্ছে, মানুষকে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। গ্রামের এলাকায়, তারপরে শহরে যারা বৃদ্ধ, যারা গ্রামে থাকেন, তাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে। তা আমরা বলতে চাই যে এই স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশনটা একটা সফটওয়্যার ইন্টেন্সিভ রিভিশন হয়ে যাচ্ছে। কি হয়েছিল? সফটওয়্যার ইন্টেন্সিভ রিগিং হয়ে যাচ্ছে। কি হয়েছিল আগে বলল যে যারা 2002-এর ভোটার তালিকার সাথে যাদের নাম ম্যাপিং আছে তারা সব ম্যাপড, আর 58 লাখ লোক যারা 2002-এর তালিকার সাথে যাদের কোনো মিল ছিল না তারা আনম্যাপড। তারপরে হঠাৎ জানুয়ারিতে বলল যে 1.5 কোটি লোক হচ্ছে লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সিতে আছেন। এরা লজিক্যাল, এদের 1.5 কোটি লোকের নাম লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি লিস্টে আছে। তাই লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সিটা কি? মানে যার মার নাম একটু আলাদা, বা যার মার বয়স একটু আলাদা, বা বাবার নাম একটু আলাদা, তারা সব লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সিতে আছে। এখন সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে এই লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি লিস্টটাকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে হবে, আর যারা লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সিতে আছেন, যাদের নাম লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি লিস্টে আছে, তারা সাহায্য নিয়ে নথি দিতে পারেন। তো আমরা যেটা বলতে চাই যে নির্বাচন কমিশনকে আরো অনেক বেশি ট্রান্সপারেন্ট হয়ে কাজ করতে হবে। যেভাবে নির্বাচন কমিশন এই এসআইআরটা করছে, যেভাবে মানুষকে কষ্ট দিয়ে, যেভাবে মানুষকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছে এদিকে ওদিকে, এটা সব বন্ধ করতে হবে। আর নিষ্পক্ষ হয়ে নির্বাচন কমিশনকে এই এসআইআরটা করতে হবে। See, when we say transparency, this is nothing we are saying new on the 20th of January. Once they released the transcripts of our meetings with the EC on the 20th of November, 51 days ago, and the 31st of December, then you will know exactly. Mamata Banerjee, the founder chairperson, and the National General Secretary Abhishek Banerjee have been giving constructive suggestions. How many letters has Mamata Banerjee written to the Election Commission? And not in a light-hearted way, one of the letters even had a handwritten PS. And what did that PS say, the postscript? It said in her writing that we know you will not reply. We know you will not reply to these letters. Who is writing these letters? A 3-time chief minister of a state who is about to become a 4-time chief minister of a state. Who is writing these letters? A lady who in 1998 set up the All India Trinamool Congress to prove a point to the Congress and many other parties. This is the kind of a mass leader. Forget Indian standards, forget Asian standards, international standard mass leader of people. You're not even replying? So we want transparency. We want SIR, we wanted the right SIR. And now, come in line. When we say transparency, this is not just a clever term which we've used in the morning, software intensive rigging. No. What software is the EC using? Why are they being revised constantly? We asked who makes these software? Come tell us. So this is the situation now. There's another very important issue we will not address today, but just to leave the thought with our journalist friends, is that the M code of conduct, I'm leaving the M silent,
This has to be equal for all political parties. Elections are going to be announced very soon. It cannot be selective. Can give you so many examples. We have full videos made as to how Narendra. Now you'll say, why are you saying Narendra? Statement. Of course I'll say Narendra. The way you are introduced calling her Mamata. What is this? She's the chief minister of a state. First name Mamata. No. Then I'll say, out of some decency, some respect, we say Prime Minister Narendra Modi. I can't say Narendra. But the way you are addressing also. Okay, if there are any questions. और एक बात मैं फिर से दोहराती हूँ कि पहले तो SIR जारी किया था बिहार में, लेकिन अब पता चला है कि इसका असली लक्ष्य था बंगाल। शुरू से असली लक्ष्य था बंगाल। और बंगाल में क्या षड्यंत्र था? षड्यंत्र ये था कि कोशिश ये थी कि किस तरह से बंगाल के वोटर का वोट देने का अधिकार छीना जाए। यही था उनका लक्ष्य। और जो पहले बिहार में शुरू किया था, लेकिन अब पता चला है कि यही उनका मकसद है कि किस तरह से वोट देने का अधिकार छीना जाए, जबकि चुनाव आयोग का दायित्व उल्टा है। चुनाव आयोग का दायित्व है वोट देने का अधिकार को प्रोटेक्ट करना, उसको सुरक्षित रखना, पर चुनाव आयोग तो उल्टा काम कर रहा है। चुनाव आयोग वोट देने का अधिकार नागरिकों से छीन रहा है। जैसे मेरे सीनियर कॉलीग ने कहा, हम SIR के खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं कि हाँ, जो फर्जी वोटर है उनको निकालिए वोटर इलेक्टोरल रोल से, जो नागरिक नहीं है निकालिए उनको। लेकिन जो नागरिक हैं, जो दिखा रहे हैं, जिनके पास कागज पत्र है, प्रमाण पत्र है कि हम हैं नागरिक, उनको आप क्या कैसे कह सकते हैं कि आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, आपका माँ का नाम ये नहीं है, आपका पिता का नाम ये नहीं है। अमर्त्य सेन को बुला लिया हियरिंग के लिए, मोहम्मद शामी को बुला लिया। तो ये किस तरह से नोटिस दे रहे हैं जाने माने भारतीय नागरिक को। तो ये इससे हमें पता चलता है, ये दर्शाता है कि उनका मकसद ये है कि नागरिकों से वोट देने का अधिकार को छीनना, यही उनका मकसद है। So good. We addressed you for 20 minutes. One sec. One microphone fell down. We'll pick it up and then we'll continue. Okay, this is it. Let me hear. It's okay. Now it's only fair that we'll try and answer a few of your questions. And yes, one by one. Rajiv. সুপ্রিম কোর্ট গতকাল বলেছে যে এই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি যে 1.5 কোটির কথা বলছেন সেই লিস্ট দিন, আর এটাও বলেছেন তাড়াতাড়ি দিতে হবে। এখন সময় অল্প, আপনারা প্রথম থেকে বলে আসছেন যে সময় নিয়ে এসআইআর করার কথা। এই নাম পঞ্চায়েত ব্লকে লিস্ট টাঙানো, এটা কি পসিবল? আপ্রাণ চেষ্টা হবে। এটা আমরা হঠাৎ 20 জানুয়ারি এক সকালে উঠে বলছি না। এটা আমাদের নেত্রী, আমাদের ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি 6 মাস ধরে এইসব বলছে, প্রায় সব ডেটসগুলো আছে। আর আমরা মানুষের পাশে ক্যাম্প হয়েছে, সব হয়েছে। যত চেষ্টা করা হচ্ছে হোক, শেষে যাই না হোক, একটাই তো পরিষ্কার যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবার আবার মুখ্যমন্ত্রী হবে, আর বাংলার লোক পুরো আশীর্বাদ দেবে। And we will form the government with all respect, no arrogance. But we will do what it takes, কারণ মানুষের পাশে আমরাই আছি। আর বলেছে যে বিএলএ থেকে সাহায্য নিতে পারবে এখন। See, I'll give you a small example. Let me give you একটা ছোট উদাহরণ দিই। A role of BLA এই যে গতকাল হয়েছে, এটা আমরা 4 মাস ধরে রোল অফ BLA বলছি, পরিষ্কার বলছি। আমরা দিল্লিতে পার্লামেন্ট সেশনে আমি বলি, এটা প্রাইভেট কনভারসেশন বাট বলি, কারণ এটা বুঝবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এখানে, সেটা কি ছিল সেশন, উইন্টার সেশনের আগে মনসুন সেশন ছিল, আমি একটা বলি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের লোকসভা লিডার, সবাইকে ডিফারেন্ট পার্টিজে, পলিটিক্যাল পার্টিজে, ইন্ডিয়া পার্টিজে, লবিতে বোঝাচ্ছিল দ্য রোল অফ দ্য BLA। এটা কিন্তু বিহারে ওরা বুঝতে পারেনি,
কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বোঝাচ্ছিল ওই সময় what is the role of the BLA, and yesterday what happened proves that the BLA has a role. Any other questions? English, Hindi? One second, let one this side, one this side. We're very, just identify yourself. Vincent from the Telegraph newspaper. Few questions. Do you all have any suggestions on how the state government will ensure that the yesterday's order of the Supreme Court, those steps, those various steps on how they will tell voters? Right. One. Second question. Second is, when you say software intensive rigging, are you all hinting at anything specific that they have tried to Yeah, okay. specifically target Okay. to certain voters? See, it's not about hinting. Let me answer your first question. What the state government will do under the leadership of Chief Minister Mamata Banerjee, they are much better qualified to say anything here than I can say at a Trinamool Congress party office in Delhi. State government. The state government has been more than efficient in doing whatever they can on the ground. Your second, there's no question of hinting. What can be bigger hint when we are saying, release the 6 hours of transcript. You will get to know all these answers. Our colleague, 3 of us are sitting here. One of our colleagues is Shomirul Islam. He's lined up 2.5 hours yesterday. Okay, there are cases. Okay, everyone's talking about famous Nobel Prize. I'll give you the real cases. There's a lady and her family, these things don't come into the media. Her grandfather won an Ashok Chakra for bravery. That family is not out. They're running around. We're trying our best to help them. So this is not some Trinamool, you have to give us Trinamool the credit. We don't want any credit. We want the voters to come there without pain and come and cast their vote. And where was this logical discrepancy list for Bihar? Yes. It was not there. It's only for Bengal. Yes. Yeah, Derek, I understand you have a separate press conference on Made in Model Code of Conduct. But today, can you give some little elaboration? Where is the discrimination from? See, What are the model code of conduct, the way the model code of conduct has been done. I don't mind, have to wait for a separate press conference on Rajasthan 2024, Mangal Sutra, infiltration, more traitors. Who said this? This is on 21st of April. Who said this? This is not some low-level BJP worker. This is the Prime Minister of India. In Lok Sabha, before Lok Sabha. Lok Sabha 2024. Dedicate your vote to Balakot and Pulwama martyrs. Latur, 9th of April 2019. Who said this? Prime Minister. 9th of April 2019. I've given you just 2 examples. I can give you 30 examples. The model code of conduct cannot become the M code of conduct, a 4-letter proper noun. Are you apprehending something in this? There's no question. We have to be practical. We have to be practical. If the Election Commission of India sleeps well at night before they put their head on their pillow and examine their conscience, they have a huge role to play to protect one of our greatest institutions. Not to become excellent CH blank 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 of one political party. They have to remember, 6 months, 9 months, 1 year, they will not be doing what they're doing. There'll be some new government in place. What will happen after the Bengal result, I don't want to speculate here. But what will happen after this Bengal result? When Mamata Banerjee is elected, what will happen 6 months? By the time the winter session comes, nobody knows. Actually, we do, but we will not talk big now. Thank you. One more question. Arikichu. আজকে মিটিং বিহারে যখন এসআইআর হচ্ছিল তখন লিডার অফ অপোজিশন রাহুল গান্ধী সাউদার্ন স্টেট থেকে পিসি করেছিলেন এসআইআর নিয়ে, কিন্তু বাংলায় এসআইআর নিয়ে আজ পর্যন্ত তার কোনো শব্দ শোনা যায়নি। কেন তিনি নীরব? এটা নিয়ে তৃণমূলের অবস্থান কি বা মন্তব্য? সেটা ভাই তুমি তৃণমূলের ওপর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো, আমি তৃণমূলের ওপর সব প্রশ্নের উত্তর দেব। অন্যান্য পার্টিরা কি আচ্ছা, করে? one. Yes.
So, you met the Election Commission of India with several pertinent questions on the last day of this December 2025. Now that it's almost a month, you plan to follow up with the ECI? Are you planning another delegation which would be going to the ECI with several other questions? We are doing a press conference today. Parliament session starts soon. Our chairperson and our National Working Committee, these decisions are taken there. Our National Working Committee under the leadership of Mamata Banerjee, Srimati Mamata Banerjee will meet. Our parliamentary party will meet after that because they are under the National Working Committee, and these decisions will be taken as and when we go. Okay. Any larger consultation with the India Bloc parties for the parliamentary session on this? We are now focused on the elections in Bengal. We are fighting 294 seats in Bengal, and we need to be, as we are doing on the ground, being close, literally next to the people of Bengal, because what is going on the ground? Either it's urban, suburban, deep rural, they are all having the same issue about my vote. You will now want to decide who will vote. As it was said very nicely, first you lost in court, and now you lose the vote. Last question, anybody else? We've answered everything. Now we will. Odno Bishoy. বাংলার ইলেকশন হ্যাঁ নবীন বিজেপি প্রেসিডেন্ট হলেন, ইলেকশন হলো না, তো উনি 14 জানুয়ারিতেই বাংলায় যাচ্ছেন, তার টার্গেট বাংলা জয়, এবং গতকাল তিনি বিজেপি নেতাদের সঙ্গে মিটিং করেছেন, এই মাসেই তিনি বাংলায় যাবেন এবং বাংলা জয়কে লক্ষ্য করছেন। All political tourists are welcome in Bengal. We wish them that they stay happy and they stay healthy. And then they fly away after that. Thank you and good afternoon.